Lovely. 1 2 3, mic check, mic check. So the goal is in higher right and front. ये higher eye बना रहा है, ठीक है गोल. So we are planning कि एक सपोर्ट पे या फिर एक और ब्लॉक पे ये टैप करके से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले. Like if you can see here, I also like book my profit here, ठीक है. So if you can see at this point, so ये liquidity grab नहीं किया, ठीक है इसने. So at this fair value gap, so if you can see यहाँ पे एक fair value gap है, ठीक है. So इसको टैप किया and then paid our TP, the higher है, ठीक है. So we book this profit. So now we are waiting for our another entry, ठीक है. So this order block is not more valid anymore. Now we look for so there are two order block now, ठीक है. One is this one, the swing low, and then the another order block you can see is here. So I'm expecting कि you know either यहाँ से टैप होके या फिर ये टैप करके we can look for buying opportunity. यहाँ पे सपोर्ट भी है, ये टैप करके for buying opportunity, ठीक है. But for now like अभी कुछ like there is no entry, ठीक है. क्योंकि अभी बस मार्केट the market is just collecting liquidity. And if you see in 5 minute time frame also, this big chunk of liquidity is here, ठीक है. Like even ये fair value gap और ये order block fill करने आया. This is an higher high, ये higher high बना रहा है.
बट हम लोग को ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेना है, विल वेट फॉर द सपोर्ट, ये फील करने आएगा, देन ओनली विल गो फॉर द एंट्री, ठीक है। और एंट्री विल बी इन 1 मिनट, क्योंकि बहुत स्लो बाइंग है, बाइंग नो डाउट बाइंग है, बट देन स्लो बाइंग आ रहा है, ठीक है। If you can see एक sweep पे, if you can see 13 23, like it's 100 pips in one sweep. Even if you see अगर breakout भी if you enter 39 to 46, it's only 40 50 pips, so we will just go along with the buying side, ठीक है। नो डाउट ये वापस आ सकता है फॉर द सेलिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। इफ यू सी देयर इज सम लिक्विडिटी हियर, ये ग्रैब करने आ सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन हाई टाइम फ्रेम दिस विल कम एंड टैप दिस, अगर इसको बाइंग भी जाना है तो ये टैप करके जाएगा। ओके, फॉर नाउ लेट्स वेट फॉर एंट्री। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, लेट्स सी कौन सा फिल करके जाता है। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, फिर रिफाइन दिस ऑर्डर ब्लॉक, देन ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, द रिफाइनमेंट, जो कि हमारा शेडो भी होता है। लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके, इंडियन भी फील हो गया, ठीक है। These are investment. Now after this, what we need to wait is एक यू नो एक ऑर्डर ब्लॉक टैप करें, और एक एफएजी, यहाँ पे बहुत सारा एफबीजी एफबीजी भी है, यू कैन सी वन एफबीजी से, दिस इज द एफबीजी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, सो ऑफ कोर्स इसको टैप करने आ सकता बिफोर गोइंग टू द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लेट्स सी इफ दिस taps this or not, okay? Otherwise we'll not plan for any entry.
अगर आप यहाँ पे भी देखोगे लाइक जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है एंड देयर इज अ सपोर्ट ओवर इट, ठीक है। सो हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट ना दे, एक यहाँ से एक ब्रेक डाउन लेके यहाँ से सपोर्ट लेके एंड देन इट गोस अप, ठीक है। मे बी इट कैन ट्रैप, एक ट्रैप बना सकता है लाइक दिस, एक ब्रेकआउट फेलियर दिखा के अगेन दिस ट्रैप, ये कंटिन्यूशन हो, बट देन माय फाइनल डेस्टिनेशन इज ये जोन, ठीक है। ये जोन और ये जोन भी हो सकता है, दिस वन, यहाँ से टैप करके ये डायरेक्टली भी जा सकता है लाइक दिस, बट देन um, this external order block is like more power, is more powerful than जो ये order block है, ठीक है। Let's see. If it's in 5 minute time frame also, 5 minute time frame पे यहाँ पे investment ले लिया इसने। So now to fill this breakout structure, we need to tap the some of the FVGs, ठीक है। यहाँ पे एक FVG है, this fill, so ये fill करने आ सकता है and is out of global से। So let's see फिर ये इसको fill करने आता है कि नहीं, कि this zone टोटली इस पे बाइंग जोन है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी ग्रैब अभी तक नहीं हुआ है, सो टू ग्रैब दिस लिक्विडिटी ये आ सकता है, इधर इसको फेल करेगा या फिर यहाँ से हम हायर हाई बनाएगा। नाउ दिस आर ऑल लिक्विडिटी, ठीक है। ये जितना भी है
लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। दिस आर ऑल लिक्विडिटी, एंड यहाँ पे कोई भी सेल मारता उसको भी लिक्विडिटी ग्रैब होगा, जो भी बाय करेगा उसको भी लिक्विडिटी ग्रैब ही होगा इसमें, ठीक है। दिस आर ऑल लिक्विडिटी, एंड हम लोग को लिक्विडिटी नहीं बनना है, लाइक वी हैव टू एंटर विद लाइक नॉट एट द लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं बनना है बस। पीपल जिसने भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा ये ब्रेकआउट पे, अगेन लिक्विडिटी बन गया वो भी, ठीक है। जी, ये ब्रेकआउट, लाइक ये ट्रेंड एंड ब्रेकआउट था, एंड देन जिसने यहाँ पे एंटर किया इसका एसोलिएट, ठीक है। सो दिस आर ये बस लिक्विडिटी बन गया मार्केट के लिए, ठीक है। सो आवर प्लान इज नॉट टू एंटर लाइक ऐसा कंडीशंस पे। आर लाइक हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा, इधर दिस सपोर्ट या फिर ये सपोर्ट पे एंट्री लेवल, ओके। लाइक टू ब्रेक दिस, टू ट्रेवल दिस, इतना से नहीं होगा। इट नीड्स लाइक मोर एनर्जी, ठीक है। सो टू हैव दिस एनर्जी, एक अच्छा बाइंग जोन इज इम्पोर्टेंट, लाइक दिस ट्रेड, ओके। यू सी दिस, ये मैंने कैप्चर किया लाइक इन द डे टाइम। इफ यू सी हियर, यू सी हियर, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन ये फेयर वैल्यू गैप, दिस जोन, इसको टैप किया। सी, यहाँ पे कहीं भी मीट पे ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है। दिस आर ऑल लिक्विडिटीज। इस पे कहीं भी एंट्री नहीं लेना है, सेल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दिस आर ऑल लिक्विडिटीज, वी हैव टू बाय हियर, एंड ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये ऑर्डर ब्लॉक करनी चाहिए, एंड दिस इज इट, ठीक है। सो दिस ऐसा ट्रेड लेना है हम लोग को, ठीक है, लाइक दिस। एंड इफ यू सी हियर आल्सो, इट वर्क्स सो वेल, ठीक है। अगेन इफ यू सी हियर, ये सब लिक्विडिटी है। अगेन पीपल जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा लाइक दिस, ये रेंज पे, ठीक है। आफ्टर दिस ब्रेकआउट बाय लिया होगा, एग्जिट सेल हो गया। अगेन जिसने यहाँ पे सेल मारा होगा उनका भी सेल गया। अगेन इफ यू सी हियर प्रॉपरली, हर जगह फेल करवाया, ठीक है। बाय फेलियर, सेल फेलियर, सेल फेलियर, सेल फेलियर, ठीक है। अगेन हियर बाय फेलियर, so people lose money in all these scenarios, ठीक है। so now what we can do, ठीक है, these are all liquidities, so मार्केट देख के आप लोग को पता लगाना कि where is the liquidity and where is the real buying zone। so इसने यहाँ पे previous low बनाया, so the we have to look for the trend also, तो the trend is in like higher high, ठीक है। so we have to look for the buying zone, तो अच्छा buying zone like here, ठीक है। if you can see, इसको कभी दिस आर ऑल लिक्विडिटी, ठीक है। दिस आर लिक्विडिटीज, अब इसको फिल करना है, ठीक है। इफ यू सी हियर, ये लिक्विडिटी अभी तक फिल नहीं हुआ है, सो दिस जोन लिक्विडिटी फिल करने आएगा। एंड इफ यू सी दिस ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया, बाय, ठीक है। एंड वेयर बाइंग का तक का होगा, एसएल बिलो लाइक दिस, एटीपी, ठीक है।
So it work like this. So we always have to trade like जहाँ पे लिक्विडिटी है उसमें वहाँ पे एंटर नहीं होना है, जहाँ पे लोग लिक्विडिटी बन रहा है हम लोग को वो लिक्विडिटी नहीं बना, नो डाउट कि किसी किसी का क्या होता है एट दिस पॉइंट। सी, इसमें किसको किसी को एंटर नहीं मिला होगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट जो हाई था लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट, दिस इज द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। अब यहाँ पे लोग एंट्री लेगा आफ्टर दिस कैंडल, ठीक है, आफ्टर दिस कैंडल एंट्री। बट लुक एट द एसएल, ठीक है, बहुत बड़ा एसएल है। सो दिस इज नॉट द सेफ वे टू ट्रेड। इफ यू सी दिस, ये ट्रेड हम लोग ने ऑलरेडी लाइक बॉटम से कैप्चर किया, ठीक है। सो वी आर नॉट कैप्चरिंग इन द मिडिल, मिडिल में नहीं घुसना है, ठीक है। दिस आर ऑल wolves, लाइक बकरी है, ठीक है। दिस आर ऑल goats who are fighting for buy sell buy sell। किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, ऐसे ही जा रहा है। So now we have to just wait for our entry. If you see in 5 minute time frame also, एक ही फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इस पर। सो वी नीड टू फिल दिस। इफ यू सी द सेलिंग, वेरी वीक सेलिंग, ठीक है। तो एक बाइंग चाहिए, तो वो बाय के लिए एक फ्यूल चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ही विल गेट एनर्जी लाइक ओवर दिस फेयर वैल्यू गैप और दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लाइक इतना मूव के लिए इसको इतना फ्यूल चाहिए, ठीक है। जितना फ्यूल मिलेगा उतना वो पंप करेगा। लाइक इफ यू सी दिस जोन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया, ये ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज द 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मार्केट को लाइक और ऊपर जाना है, लाइक बहुत ऊपर जाना है, सो ये फिल लेना होगा इसको, ठीक है। he needs to grab this fuel, क्योंकि see these are in 15 minutes time frame, these are slow से slow buying, ठीक है, स्लो बाइंग। और इतना जो इतना इतना बाइंग, ठीक है, दिस दिस पॉइंट अगर इसको फिल मिलता है, इफ यू सी दिस पॉइंट, इफ यू सी दिस रेंज, ये कितना का रेंज है, 2646, इट्स ऑलमोस्ट 50 50 पॉइंट्स, ओके। तो ये 50 पॉइंट्स कवर करने के लिए इसको ऑलमोस्ट 3-4 डेज लग गया। वेर एज दिस, इसने एक ही इन इन वन गो इसने फील कर दिया, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक यू नो गुड पंप एंड बैड पंप। सो दिस इज, ये ट्रेंड कर रहा है नो डाउट। इन लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा ये हायर हाई बना रहा है, बट देन दिस इज स्लो बाइंग, ठीक है। स्लो हायर हाई, धीरे धीरे हायर हाई बना रहा है। लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो, एंड देन दिस इज हाई, ठीक है। सो फिर again इसको हायर हाई बनाने के लिए इसको फील चाहिए, ठीक है, जो कि इसको मिलेगा लाइक एट दिस पॉइंट, इसको ये पॉइंट पे फील मिलेगा तो को हायर हाई। एंड इफ दिस ब्रेक्स, दिस इज कमिंग लाइक, दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। अपना जो अपना ट्रेंड है लाइक फॉर बाइंग, ये चेंज हो जाएगा, लाइक इफ दिस ब्रेक दिस लो, it will change to the lower low, okay, the selling side, जो कि यहाँ तक का सेलिंग होगा एंड देन बाय होगा, ऐसा कुछ। सो नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि बाइंग यहाँ से आता है या फिर यहाँ से आता है, okay?
अगर आपको इसमें एंट्री प्लान करना था, इसमें आपको यू कुड हैव प्लान लाइक फॉर द सेलिंग एंट्री, ठीक है। सेलिंग एंट्री कब बनता था, लाइक एट दिस पॉइंट, जब इसने ये ट्रेंड लाइन टच किया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर, एंड देन यू टीपी दिस, ठीक है। यू कुड हैव प्लान ऐसा करके कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो इन दिस एट दिस पॉइंट, एंड ऐसा ऐसा रहेगा 1:4 1:5 जितना भी आपको आता है, और या फिर इतना तक भी रख सकते हो 1:2 1:3 लाइक दिस, क्योंकि इस पे एक सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, ओके। सो ये फिल करने आएगा फर्स्ट, तो ये फिल करेगा, एंड देन दिस कैन गो अगेन, ये ट्रेंड लाइन टीपी ही टच करने, एंड देन ये फिल करते से इट कैन कम बैक, ठीक है। इतना सा स्कैल्प करके, लाइक you will get only 20 pips if you see here, यहाँ से if you sell we'll get like around 42, and then TP 39, 30 pips हो गया, it's good for like scalp के लिए सही है, but then we are looking for like momentum based trades, अच्छा momentum, so there is no momentum and all, these are all liquidity, ठीक है, यहाँ पे liquidity graph होगा बस। So at this point ये trend line पे you can sell this support, या फिर यहाँ पे sell, या फिर buy, you know, यहाँ पे sell करेगा, you have to go short here, and then again you can exit here, again you can buy here, exit here. These are like only 10 pips, 20 pips, 15 pips, वैसा scalp होगा बस। So these are all liquidity getting trapped। अब ये liquidity किसके बेनिफिट में आएगा, जो बिग प्लेयर्स है, ठीक है, उनके लिए काम में आएगा फिल के जैसा। दिस आर ऑल फेल्स, वी आर बिकमिंग द फेल्स, उनका एनर्जी है, ठीक है। अब वो लोग को बाइंग चाहिए, ठीक है, वो लोग को एक अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए। सो ये लोग जितना भी एंटर किया है, दिस आर ऑल गेटिंग फ्यूल अप, ठीक है, ये लोग सब लिक्विडिटी बन रहा है। वी आर जस्ट होपिंग कि ये यहाँ तक, ये पॉइंट तक आ जाए, एंड विल गो फॉर प्लान एंड देन टीपी दिस, या फिर यहाँ तक दिस एक्सट्रीम जो ऑटो ब्लॉक है, यहाँ पे ही टैप करें, एंड देन वी कैन प्लान फॉर फॉर द न्यू हायर हाई, बट देन इन बिटवीन नो प्लान्स। इफ यू सी इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो, यही एक जोन है, ठीक है, ये फील नहीं हुआ है, दिस जोन। Okay, let's see other opportunity, इसमें we can plan। Hmm,
इफ यू सी जो यहाँ पे सेल करता लाइक हियर एट दिस पॉइंट ट्रायल आते सेलिंग फिल हो जाता ये सपोर्ट ठीक है आपको मिल जाता 1:2 1:3 कितना 23 पिप्स का मिल जाता अगेन TP2 at this point 30 pips and then यहाँ तक you can get like 80 pips ठीक है so you could have traded like this क्योंकि इसको आना ही है यहाँ पे to fill this zone okay if you see like from breakout structure there is no order block जो खाली है vacant है सब filled है ये भी if you see this swing ये अनफिल्ड है ठीक है बट देन ये सब लिक्विडिटी है these are all liquidities if you can see मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया लाइक जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा अभी नो नो बिग मूव विल कम नाउ क्योंकि बिग प्लेयर्स को एक्शन लेने के लिए उनको फ्यूल चाहिए सो दिस आर ऑल दिस दे आर वेटिंग फॉर एंट्री है उनको एंट्री यहाँ पे चाहिए अगर यहाँ पे चाहिए नॉट लाइक दिस यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे वो सो वी हैव टू एंटर विद देम ठीक है जहाँ पे बिग ऑपरेटर्स बैठे हैं लाइक यू नो where they can buy possibility जहाँ से possibility है we have to enter with them यहाँ पे like people who enter over here these are all liquidity grabs if you see पहले यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का है ठीक है जिस पीपल जिसने यहाँ पे बाई किया होगा if you see जिसने यहाँ पे बाई किया होगा he got trapped selling आया ठीक है so these are all liquidity ले रहा है धीरे धीरे करके and if you see here also even this यहाँ पे भी liquidity बना okay? like if you see there was a support over here okay? सेलिंग दिखाया वापस आया बट देन इट डिडंट ब्रेक थ्रू अगेन इसमें भी सेलिंग का ट्रैप किया ओके सो दिस आर ऑल गेटिंग लिक्विडेटेड सो वी विल जस्ट वेट फॉर आवर एंट्री ठीक है आवर एंट्री विल बी लाइक अराउंड दिस यहाँ पे देखेंगे हाउ इट वर्क्स हाउ इट गोस एट दिस पॉइंट या फिर एट दिस एरिया वी आर प्लानिंग फॉर बाय ठीक है क्योंकि इफ यू सी इन हायर टाइम फ्रेम इन फैक्ट इन 15 टाइम फ्रेम सो दिस इज मेकिंग ए हायर आई ठीक है low high low high low high low high again low and then high so I'm expecting to create like around यहाँ पे एक वो है POI है तो वो टैप करे and then it goes up okay now what you can do is plan a selling trade scalp short scalp okay like this till this POI you can plan this short scalp
which is 25 pips. That's it. उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बस बस इतना प्लान करो. Like 1:3 with the small capital, you can take profit like this. Okay, and you can expect like अगर इसको extreme order block tap करना होगा, then this might go like ऐसा. ठीक है, ये ऐसा भी जा सकता है. ठीक है, अगर इसको इसको टैप करना है, then it can fall like this. But if in case if it doesn't goes, यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए. ठीक है, like at least 24 pips, 25 pips. So these are small caps you can capture. ठीक है, साइडवेज मार्केट पे यही प्लान करना है जहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पे साइडवेज पे स्कैल्प मारना है. लाइक इफ यू सी हियर, यू कुड हैव सोल्ड, यहाँ पे सेल कर सकता था टू इट दिस, अगेन रीचिंग दिस पॉइंट, यहाँ पे सेल करना था टू इट दिस पॉइंट. ओके, सी अगेन इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया. लेट्स सी अब ये क्या करता है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको भी इसने ट्रैप किया होगा. ठीक है, दिस विल गेट ट्रैप्ड. जिसने ये ब्रेकआउट देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये ब्रेकआउट है, फेलियर है, नेक्स्ट विल बी ए जेन्युइन वाला. बट देन ये भी एक ट्रैप निकला क्योंकि इसको फ्यूल ही नहीं मिला है, सो यू डोंट गो अप. सी मैंने क्या कहा था, ऐसा दिखाया कि इसने ब्रेक कर दिया, बट इट डिडंट ब्रेक. सो नाउ ये रिजेक्शन पे यू कुड हैव प्लान सेलिंग, एंड देन ये सेल करते से यू कैन गेट लाइक 20 पिप्स. अगेंस्ट 1:2 मिल जाता, एक छोटा अमाउंट डाल के स्कैल्प मार लेता. दैट्स इट, इतना ही मिलता है बस इसमें. एंड इफ दिस हैज टू गो, आप इसको ऐसा प्लान करना है. ठीक है, इफ यू सी हियर, जैसे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इन्वेस्टमेंट बनाया. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बनाया. नाउ इट हैव टू मेक द हायर आई. ठीक है, नाउ व्हाट यू कुड हैव प्लान्ड इज लाइक एट दिस पॉइंट, जैसे इसने ब्रेक किया वापस आया, इट कुडंट हैव गॉन मोर. ठीक है, सो यू कुड हैव प्लान ये ट्रेड. ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेड यू कुड हैव प्लान लाइक 1:3 रेशियो, ऐसा कुछ. और या फिर दिस लो 1:2, this 1:3, and then this 1:11, 1:10, ऐसा कुछ प्लान कर सकता था. लाइक यार फर्स्ट टीपी हियर, 1 is to first TP, second TP, and third TP, this one direct. So you could have planned like this. At least कुछ नहीं भी हो तो at least you see 2.22 to 20 pips will go all scalp. See again liquidity grab करने आया है. Okay, what is like you plan here. ठीक है, let's see. आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका टीपी का रहता like this high. Let's see if this gets hit or not. ठीक है, I'm predicting this is just a liquidity. Okay, I'm predicting this is just a liquidity. जिसने यहाँ पे एंटर किया वो लिक्विडिटी बन जाएगा, यहाँ पे सेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसका. ठीक है, टाइम फ्रेम. लेट्स सी इसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, इसके साथ क्या होता. और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था, लाइक उनका एसएल यहाँ पे रहता एट दिस पॉइंट, लाइक एट दिस पॉइंट. ठीक है, उनका एसएल यहाँ पे रहता. लेट्स सी दिस ट्रेड गोस वेल और नॉट. ठीक है, यहाँ पे बाई था, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंड दिस द टीपी. लेट्स सी इफ दिस गेट हिट्स और नॉट. ठीक है,
सी ऐसा आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेता, यू वुड हैव बिकम द लिक्विडिटी, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ये एसएल खाने आ जाएगा, एंड अब क्या बने, लिक्विडिटी। किसका लिक्विडिटी बना, जो बिग प्लेयर्स है जो रियल एंट्री लेंगे उनके लिए एक लिक्विडिटी बन गया वैसा, ठीक है। दिस इज व्हाई ट्रेंड लाइन, नो डाउट ट्रेंड लाइन हेल्प करता है, ठीक है, नो डाउट ट्रेंड लाइन वर्क्स, बट देन यू नीड टू नो कौन सा ट्रेंड लाइन जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पीओआई है, ठीक है, बहुत सारा पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, इसने इसको ग्रैप नहीं किया। सो दिस आर जस्ट द लिक्विडिटीज, लिक्विडिटी ग्रैप हो, ये भी एक लिक्विडिटी बन गया, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ये यहाँ तक कभी नहीं रहेगा, ठीक है। दिस विल नेवर ट्रेवल यहाँ तक, या ट्रेवल यहाँ तक जाएगा ही नहीं, उतना बाय आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर इसको यहाँ तक बाय आना है तो बिग प्लेयर्स को अमाउंट डालना होगा, बट दे वॉन्ट पुट देयर अमाउंट हियर, उनको पैसा चाहिए डिस्काउंटेड एरिया पे। यहाँ पे एंट्री ऐसे लीड हो गया, अब वो अब लिक्विडिटी बन गया अगेन सिमिलरली। आप यहाँ पे एंट्री लेते, एस एल यहाँ पे, अगेन लिक्विडिटी, सी जस्ट इंच अवे, और अब लिक्विडिटी बन गया, ठीक है। एस एल आपका यहाँ पे होता, इट डिड क्रॉस, यू हैव बिकम द लिक्विडिटी, एंड आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता, ठीक है। फॉर मी दिस इज जस्ट द लिक्विडिटी। अगेन अनदर सिनेरियो, ठीक है। अभी लेट्स सी अनदर सिनेरियो, क्या क्या चांसेस, लाइक लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, पीपल, लोग सोचेंगे कि ये ट्रेंड एंड ब्रेकआउट है, पुल बैक, एंड देन दे माइट गेट एंट्री ओवर हियर, ठीक है। ये पुल बैक पे एंट्री लेता एट दिस ब्रेकआउट, ठीक है। एंड देन एस एल यहाँ पे रहता, पुल बैक, इसके हाई पे एंट्री लेता, लाइक हियर एंट्री लेता, लाइक दिस, एंड उनका एस एल रहता लाइक बिलो दिस, ठीक है, दिस इज द एस एल। नाउ लेट्स सी क्या होता है, लाइक इफ दिस गेट्स हिट टीपी, और ये लॉस हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी एस एल चला गया, सेकंड टाइम आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। अगेन थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट पे चला गया। नाउ लेट्स सी, ये फोर्थ टाइम, ओके, दिस इज द फोर्थ टाइम, ये ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया। लेट्स सी इफ दिस गेट्स टीपी और नॉट। दिस आर ऑल लिक्विडिटी, ठीक है। अगर एक अच्छा सेलिंग भी आ जाएगा, ये पूरा लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज जोन, ठीक है, पूरा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, सब पीपल लिक्विडेट हो रहा है इसमें, ऑल पीपल आर गेटिंग लिक्विडेड। एक रेड कैंडल आ जाएगा, एसिलेट हो जाएगा, ठीक है। मे बी दिस कैन गो लाइक हियर अब, कितना, ये कितना पॉइंट्स है, 42 से 46, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का रेंज है, ठीक है। दिस कैन ट्रेवल क्योंकि बस 40 पॉइंट्स का है।
बट देन इसने कितना फुल ग्रैब किया, जस्ट जस्ट टू हैव दिस मूव मूव, ठीक है। वो आप नोटिस करना, ये ब्रेकआउट, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, इतना सारा लिक्विडिटी, अगेन यहाँ पे लिक्विडेट हुआ, ठीक है। ये ग्रैब किया, नाउ इतना लिक्विडिटी में ये इतना पंप कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी ये दिस लिक्विडिटी में ये कितना पंप कर सकता है, ठीक है। इतना तय करेगा या फिर ऐसा जाएगा या फिर दिस कैन गेट अ टीपी, लेट्स सी। सो अभी तक पीपल जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। दो ऐसे लीड हो गया, एंड देन दिस इज द थर्ड वन जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेता है, यू नो। दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। नाइस। सो इफ यू कैन सी विद दिस लिक्विडिटी, ये एक लिक्विडिटी जोन, ये दो लिक्विडिटी, ठीक है। ये ये लिक्विडिटी के बाद इतना सा पंप आया है, ठीक है। एंड ये पंप इफ यू सी कितना का पंप है, ओके। 23 पिप्स, लेट्स सी ये कितना तक जाता है, ठीक है, विदाउट एनी पुल बैक। कितना कितना पंप देता है, लाइक दिस लिक्विडिटी कितना पंप दे सकता है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए शार्प फॉल, ठीक है, एक शार्प फॉल, एक फॉल आना चाहिए शार्प करके। जो ये लिक्विडिटी है एक ही बारे में ग्रैब कर देगा, ऐसा फॉल आना चाहिए इसमें। इसमें पूरा टाइम फ्रेम। इफ यू कैन सी, ठीक है, हेल्दी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, हेल्दी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड देन इसने दिया हाउ मच, 26 पिप्स, ओके। 26 पिप्स इसने ट्रेवल किया, इंस्टेंट सेल, ठीक है। 26 पिप्स का हेल्दी कैंडल बना और इंस्टेंट सेल। दैट मीन्स जो ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, दिस लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी इतना ही एनर्जी जनरेट कर पाया, ठीक है, जस्ट 26 पिप्स एनर्जी जनरेट कर पाया। नाउ ये कलेक्टिवली इतना सारा जो कलेक्ट हुआ है, ठीक है,
इमेजिन कितना पंप दे सकता है, ठीक है, बट देन टू एक्टिवेट दिस, जो अभी यहाँ पे बायर्स है, ठीक है, ये वाला बायर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, एंड देन दिस बायर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ ये जो एक्टिवेट हुआ है, दिस आर सम जो जो लिक्विडेट हुआ है यहाँ पे, एंड ये जोन पे, बस उनका पंप है। सो यू वोंट गेट लाइक 100 पॉइंट्स, उतना नहीं मिलेगा इसमें। बट अगर आप यहाँ पे एक पी वाई लिखता, एंड देन ये टीपी दिस आपको 120 पॉइंट दे देता है इसमें, ठीक है। अगर इतना फुल आता, दिस एनर्जी आपको मिल जाता, देन 120 पॉइंट्स। अगर एंड यहाँ से लेता, you'll get like 70-80 पॉइंट्स, ठीक है, अच्छा खासा फुल मिल जाता, बट देन दिस इज जस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। इफ यू सी दिस कैंडल, ठीक है, इसने ये टैप किया, एक ही बारे में इतना पंप किया, ठीक है। सो ऐसा कुछ मूव नहीं है वो। इफ यू सी दिस इज 120 पिप्स। अगेन इफ यू सी आपको गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अगेन दिस ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, एंड देन यहाँ से बाइंग आया, ERTP अराउंड 120 पिप्स, ऐसा आ गया, ठीक है, वो भी ऑन वन गो। अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ABG टैप किया, एंड देन दिस इज 100 पिप्स, ठीक है, 100 पिप्स। अगर इसका हाई भी लेता, देन इट्स 110-120 पिप्स, सब अराउंड 100 पिप्स। सो दिस इज व्हाट फ्यूल हेल्प्स, ठीक है, जो एनर्जी हेल्प करता है। अगेन अगर ये टैप करता, देन इट कैन गो इन, ये बहुत अच्छा POI है। अगर ये टैप करता, देन ये स्लो बाइंग नहीं होता, इंस्टेंट होता। नाउ इफ यू सी हियर, दिस इज जस्ट 20 पिप्स का कैंडल, ठीक है, 20 पिप्स का कैंडल, बट 20 पिप्स का कैंडल बनने के लिए बहुत सारा बाय सेल आ रहा है, ठीक है। सो दिस आर जस्ट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, एनर्जी चाहिए अच्छा खासा। अगर ऐसा ऐसा लिक्विडिटी चाहिए, दिस आर ऑल लिक्विडिटीज, लाइक ऐसा रन चाहिए, लाइक दिस। सो वी विल बी कैप्चरिंग ऐसा रन, ठीक है, नॉट लाइक भाई सेल स्लो स्लो, वैसा कैप्चर नहीं करना है अपने को। वी आर लुकिंग फॉर दिस क्लीन मूव, a clean move। यू सी आपका अभी तक टीपी हिट नहीं हुआ, ओके। इफ यू हैव एंटर्ड, अब अगर यहाँ पे एंट्री लेता, नो डाउट टीपी हो जाता, बट देन ये बस 20 पिप्स का है एंट्री है। दिस माइट हिट द हायर हाई, बट देन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। इफ इज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है, इंडिसीजन इंडिसीजन। सो मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन गो सेल ऑफ, यहाँ तक का सेल ऑफ। अगेन यहाँ पे लिक्विडेट होगा, अगर इसको टीपी हिट होना था, एक वन गो में हो जाता। दिस इज द 20 पिप्स। So at this point, what I do is, trend line पे majority of the times I go against the trade. Okay, this में, like at this point I go selling, at this point I go selling. Like if you see here, ठीक है, at this point selling, I passed second, इसका support, ये भी trigger हो गया, again इसका TP this I triggered। अगर ये तो चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, if this you will do in like 5-15 minutes टाइम फ्रेम, अच्छा TP मिलेगा, okay? और एक फेल हो जाएगा, ठीक है। फोर में 3 passed, 1 fail, okay। Like, but if you see in 5 minutes time frame, like this is the zone, okay, this is the zone, ठीक है? कितना बार इसने इसको रिटेस्ट किया, 1 2 3 4, ठीक है।
एंड फाइनली इसको इसने यहाँ पे फेल कर दिया. ओके, नाउ इफ यू सी हियर, फर्स्ट इसमें स्किप कर दिया. अगेन दिस कितना पॉइंट्स, अराउंड 49-50 पॉइंट्स अगेन. ठीक है, चलो अगेन, अगेन वापस आया. अगेन वापस से 50 पॉइंट्स. ठीक है, सो नाउ यू हैव लाइक 100 पॉइंट्स. ओके, 100 पॉइंट्स अपने कैप्चर किया. अगेन नाउ आपने यहाँ पे एंटर किया. स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता, कितना स्टॉप लॉस गया होता अगर आपने लिया होता इसमें. ठीक है, दिस इज लाइक 10 पिप्स का स्टॉप लॉस. दैट मीन्स लाइक you have already like 90 points मिली इसमें और वन स्टॉप लॉस. ठीक है, सो दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लाइक कितना टाइम से वर्क करता है. इफ दिस फेल्स, चला गया. अगेन इसमें भी ब्रेकआउट भी जेन्युइन नहीं था. इफ यू सी, द ब्रेकआउट वाज नॉट जेन्युइन. स्टॉप लॉस खाया, ये भी स्टॉप लॉस खाया, बहुत सारी स्टॉप लॉस खाया. बट अगर आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो, यू नो अगेंस्ट ट्रेड लेते हो, देन it has more chance of getting profitable. ठीक है, rather than breakout trades. Breakout trades, if you see here, हमने यहाँ पे भी ब्रेकआउट ट्रेड लिया, like at this point. ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ. अगेन ब्रेकआउट ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ. ब्रेकआउट ट्रेड लिया, अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ. ओके, सो नाउ अगर ये ट्रेड भी रन होता, इफ यू सी, अच्छा पम्प दिया, बट देन नॉट मच एनर्जी की अपना टीपी हिट कर जाए. ठीक है, कितना इसने कितना दिया, लाइक इफ यू सी फ्रॉम एंट्री, यहाँ पे एंट्री होता 25 पिप दिया. नाउ इज ट्रेवलिंग एट 10 पिप्स. ठीक है, उतना तो लाइक इफ यू कैप्चर दिस मूव, लाइक फ्रॉम दिस पी ओ आई, सी 15 पिप्स तो एक ही कैंडल में मिल जाता है. ठीक है, अगर दो तीन कैंडल में 50 पिप्स. अगेन नाउ दिस इज गोइंग अप, इसने फ्यूल लिया. ठीक है, दिस फ्यूल लिया, वापस जाएगा, ये स्लो बाइंग आएगा आने से भी, नॉट लाइक दिस मूव. तो वी नीड टू वेट ऐसा मूव के लिए. ठीक है, नॉट लाइक ऐसा स्लो स्लो बाइंग. लेट मी गिव यू लाइक अनदर एग्जांपल. ठीक है, लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इफ यू सी दिस सेलिंग. ओके, सेलिंग आया, दिस मूव अच्छा खासा फॉल आया. ठीक है, 800 पिप्स 900 पिप्स का. अगेन इफ यू सी दिस स्लो बाइंग इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक इसमें ऑटो ब्लॉक था, बाइंग आया. ठीक है, अगेन स्लो सेलिंग, स्लो बाइंग, स्लो सेलिंग, लोअर लो बनाया. ठीक है, एस&पी आई था, टैप किया, वापस गया. अगेन दिस पी आई था, टैप किया, पंप. ओके, कुछ सी शार्प सेलिंग, कंसोलिडेशन, सब लिक्विडिटी है, सब लिक्विडिटी. ओके, सेलिंग, ये सारा लिक्विडिटीज, एक सेलिंग के लिए एक लिक्विडिटी बन गया ये लोग. ठीक है, अगेन इफ यू सी दिस, ये सब लिक्विडिटी बन गया एक अप मूव के लिए. दिस आर ऑल लिक्विडिटीज एक अप मूव के लिए. इफ यू सी हियर आल्सो, दिस आर ऑल लिक्विडिटीज. इफ यू सी, जिसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लिया होगा, ठीक है, ऐसे लेट हो गया एंड देन वापस आया, एंड देन ये रिपीट हो गया. क्या क्या, अगेन दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लिया होगा जिसने, दिस ब्रेकआउट, फेलियर. अगेन लिया होगा, फेलियर, सेल लिया होगा, फेलियर, अगेन ब्रेकआउट, फेलियर. ठीक है, सो इसका मतलब है दिस आर ऑल लिक्विडिटीज. एक्चुअल मूव ये है. ठीक है, एंड
see this move, ठीक है, ये मूव, these are all liquidities, इसमें ट्रेड नहीं लेना है, एक सेलिंग आया, ठीक है, लाइक इफ यू सी इसका जेन्युइन मूव कहाँ से आया, ठीक है, लाइक इफ यू सी जिसने भी सोचा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, बाय गया, ओपन आएगा, ठीक है, सो ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है, दिस आर ऑल लिक्विडिटीज, नो डाउट इसने एस एल हर्न नहीं किया, बट दिस आर ऑल लिक्विडिटीज, फेल अप किया, ठीक है, फेल अप किया एंड जेन्युइन मूव, ओके, सो इफ यू कैन सी जो यहाँ तक टीपी हिट हुआ, ये वन गो में टीपी हिट नहीं हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया, वापस गया, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी था, इफ यू सी हियर देयर इज वन ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी देयर वैल्यू क्या, दिस वन, ये टैप गया, ऊपर गया, ठीक है, सो हर जगह लिक्विडिटी काम करता है, ठीक है, दिस इज वन मिनट टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी, सो अगर जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होता है वन गो में चला जाता है, लाइक टू फील दिस, if you see uh, दिस वन गो में चला गया, ठीक है, क्यों, इसने इस पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, अगेन अगर ये फील हो गया, if you see here this level है, what is order block, इसने इसको टैप किया, इसका फ्यूल इतना तक ही था, अगेन इसको और जाने के लिए इतना फ्यूल वापस दिया, ठीक है, सो उसके बदले में व्हाट यू कैन डू, अच्छा मूव के लिए, दिस आर ऑल फ्यूल्स, इफ यू कैन सी इतना फ्यूल में यहाँ तक अभी तक वो ये मूव आया ही नहीं है अभी तक, ठीक है, ये मूव आया ही नहीं है, द मूव जो ये लिक्विडिटी बना उसका मूव ये था, अगेन ये लिक्विडिटी पे मूव ये था, अगेन दिस लिक्विडिटी पे मूव ये था, ठीक है, सो यू कैन सी इसका मूव अभी तक नहीं आया, ठीक है, दिस लिक्विडिटी इसका मूव आना बाकी है एंड इसका ब्रेकआउट बहुत भरा होगा, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देता तो ये ऐसा ऐसा कुछ पंप देता, बट देन इट हैज अभी तक आया नहीं है, दैट मीन्स इट हैज टू कम, लाइक इनका अभी तक टैप नहीं हुआ है, सो मे बी दिस एरिया या फिर दिस एरिया ये टैप करेगा एंड यू कैन सी ऐसा कुछ मूव, ठीक है, जस्ट सी ये इसको यहाँ पे या फिर और एल्स दिस एक्सट्रीम पीओआई को टैप करने आएगा, ओके, देन ओनली एक अच्छा ऐसा मूव आएगा, नॉट ऐसा स्लो बाइंग, इफ यू सी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे these are all slow buying, ऐसा मूव आना है, नो डाउट वी कैन स्कैल्प, इसमें वो स्कैल्प कर सकता था, स्कैल्प, बट और मोटिव इज टू कैप्चर ऐसा कुछ ट्रेड होगा, लाइक दिस ट्रेड, ऐसा कुछ बनेगा, इफ दिस कम्स हियर एंड अगर ये ऐसा भी आता देन आल्सो वी कैन एंटर ये तक, अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन नहीं देता है, सो दिस आर द टू ट्रेड्स, ओके, नाउ इफ यू सी यहाँ पे हाई बनाया, हाई पे रिजेक्शन कैंडल है,
नाउ दिस विल एग्रेसिवली फॉलो, ऐसे एग्रेसिवली फॉल आएगा। कहाँ तक आएगा? ये टैप करने आएगा। ओके, इसने अपना लो बना लिया। ओके, दिस इज द न्यू लो। दिस इज द न्यू लो। It just breaks. My question is it. इस तरह और फील्ड है, ऐसा फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया। अब यहाँ पे टैप तो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये चॉप करेगा एंड दिस विल शिफ्ट टू लोअर लो। नाउ ये यहाँ पे कैसा बन सकता है? दिस ब्रेक्स, ऐसा कुछ बनेगा अभी इसमें, ठीक है। फिर से यहाँ पे टैप करेगा, एंड दिस विल कम हियर। तो ऐसा कुछ बन सकता है, दिस इज द प्लान। इफ दिस फॉर, अगर इसको यहाँ पे टैप करना ही है तो it's a 15 minute। बाकी वी आर स्टिल, अभी तक तो बुलिश ही है। who will plan for bullish trade, यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, लाइक एट दिस पॉइंट बाइंग ही प्लान करेंगे, नॉट सेलिंग। बट बाई यहाँ पे नहीं करना है, एट दिस टॉप बाई नहीं करना है। विल बाय एट द बॉटम, अगर मिलता है इन मिडिल वी ऑन एंटर। इफ यू सी यहाँ पे भी एक सेलिंग पॉइंट है। ओके, बहुत सारी लिक्विडिटी है इसमें, तो ये ग्रैब करने आ सकता है। बट इतना इतना तक आने के लिए अच्छा फ्यूल चाहिए, सो इट हैज टू कम हियर, ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी। डबल टॉप, इसमें डबल टॉप बनाया है, डबल टॉप ब्रेक नहीं किया, इंस्टेंट सेलिंग। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे टैप करेगा इंस्टेंट सेलिंग आएगा।
कभी भी लिक्विडिटी नहीं है, देर इज नो लिक्विडिटी टू ग्रैब, दिस फील्ड हो गया, दिस वन फील्ड, सब फील्ड है, ओके। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये एक यहाँ पे, दिस इज द ओनली लिक्विडिटी। इफ दिस ब्रेक्स, सीधा यहाँ पे चौक करने जाएगा, ओके। देन इट विल बी मार्केट टू शिफ्ट, देन हम लोग का पूरा सेलिंग सेलिंग साइड होगा। सेलिंग कहाँ तक का होगा, एट दिस पॉइंट, जहाँ तक का प्लान है यहाँ तक का सेलिंग होगा फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। ये सेलिंग यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इंस्टेंटली, लाइक हायर को इंस्टेंटली ब्रेक नहीं किया, सो इट्स नॉट बुलिश फ्रॉम फ्रॉम ये एरिया से, और बुलिश नहीं होगा, लाइक ये बॉस देखो, ठीक है। इफ यू सी दिस, if you see this higher high, इसने instant break किया with a pump, और इसने rejection दिया, so it's it will come for the selling again। यहाँ पे देखो, ठीक है, this zone higher high rejection candle, एक selling, ठीक है, higher high rejection candle selling। um another example here, higher high को टच किया, सेलिंग आया, ठीक है। कितना का कितना पॉइंट्स का सेलिंग आया इसमें, इट्स लाइक 50 पॉइंट्स का सेलिंग, ओके। ओके, let's move to our chart। सो वैसा करके we could have planned this, like यहाँ पे कैप करता है, सेलिंग आया like at this point, ऐसा करके, एंड आरटीपी विल बी दिस वन 50 पॉइंट्स का, um, है ना, ऐसा प्लान कर सकता था लाइक दिस ऑन दिस एरिया। एंड एनीवेज हम लोग का माइंड वही था कि ये फील करने आएगा आएगा, तो वी कुड हैव प्लान फॉर दिस ऐसा कुछ प्लान कर सकता था इसमें, ओके। सो दिस इज द एंटी रिवर्सल, राइट। ये बाइंग देखो, एंड देन लुक एट द सेलिंग, ये जितना भी मूव आया है, दिस आर ऑल लिक्विडिटीज खुद को पुश कर करके आया है, ताकि अगर एक जेन्युइन मूव होता, इट वुड बी लाइक दिस। अब इसमें सेलिंग किसने बैठाया, तो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने बैठाया यहाँ पे, 5 मिनट पे देखा उन्होंने, इंस्टेंट एट द टॉप, टॉप से सेल कर दिया। अभी लोग यहाँ पे सेल कम कहाँ करते थे, नो, ये ब्रेक करेंगे देन सेल, तब तक ये मिडिल होता था, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सेल मार दिया, एंड आर पॉइंट इज, हम लोग भी बाई करेंगे बट देन एट द बॉटम, बॉटम पे बाई करेंगे, नॉट एट द मिडिल पे बाई नहीं करेंगे, ठीक है। दैट वाज आवर ओनली प्लान। जब ये ट्रेंड लाइन था, if you see the risk to reward ratio, यहाँ पे बाय करता 30 पॉइंट्स का, अगेन इफ यू बाय फ्रॉम हियर फ्रॉम आवर जोन, यू विल गेट 70, एंड देन फेल इतना मिलता कि ये पंप हो जाता, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता, इतना फेल आता है। See, अभी ये लोअर लो बनेगा, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे आएगा अप, ऐसा करके, एंड देन इट जस्ट कम हियर, ठीक है, इसको यहाँ पे आना ही है, इन दिस, ओके।
क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग जोन नहीं है, नो वन विल बाई हियर, ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया नहीं है। यहाँ से बाइंग आएगा या फिर एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक से आएगा। यू कैन सी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर आया है। सो अगर इसको और एक बार हायर हाई बनाना है तो ये टैप करना होगा, इधर दिस, एंड इफ दिस ब्रेक्स लाइक दिस जोन, अगर इसको ब्रेक करता है देन वी कैन प्लान फॉर यहाँ तक का सेलिंग, ठीक है, लाइक स्लो सेलिंग आएगा, लाइक स्विंग बनाते आएगा, एंड इट इज टैप हियर, ठीक है, ऐसा टैप आएगा, एंड देन उसके बाद इफ दिस टैप्स हियर, अगर ऐसा करके ऐसा टैप करता है देन इन 1 आवर टाइम, लाइक इन बिगर टाइम फ्रेम, दो कैंडल में लाइक दिस, ओके, क्योंकि ये 30 मिनट्स का बाइंग जोन। पीवीसी हियर, यहाँ पे भी एक बाइंग जोन है इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये बाई नहीं हुआ है लाइक दिस जोन, सो मे बी इट हैज टू ब्रेक दिस, ओके, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा then we can look for again same high, so ये टैप हुआ, okay, let's watch this candle, इसके बाद एक ब्रेक आता है then we can only plan for यहाँ से बाइंग, कि यहाँ पे भी एक बाइंग जोन है, लाइक इतना इतना लिक्विडिटी के लिए, लाइक विद दिस, ये लिक्विडिटी से इट कैन ट्रेवल दिस मच, इतना जा सकता है स्कैल्प, बट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम देयर इज नो लिक्विडिटी, सब क्रैप है ऑलरेडी, फील्ड है, ऑल फील्ड, नो लिक्विडिटी, सो ये लोअर लो बनाने आएगा वापस, and then we'll get our entry. 5 मिनट पे ग्रैब किया, स्मॉल बाइंग, फर्दर फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आएगा, वी वन प्लान मिड में प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, वरना वही एसएल हंड वो सब होते रहेगा, सो वी बेटर प्लान गेट दिस जोन, और ये ऑर्डर लाइक ऐसा भी प्लान कर सकते हो, लाइक मैं हटा दूँ, on 5 minutes if you want to trade you can plan your buy over here, like this, यहाँ पे बाइंग रख दो, इतना का ऐसे लगा दो, and your 100 points का TP, okay, and then if you want to filter this, filter करना है यहाँ तक रख दो, बट सेवर साइड अगर एंट्री मिस नहीं होना है then you can plan here, जैसे 5 टाइम पे ही पे, तो plan your buying like this, okay, and that will buying over, if you want to plan for the buy trade, क्योंकि in 15 minutes time frame it's bullish, buying है completely, high rise जा रहा है, so we are planning for another high, ठीक है, जब तक इसको ये फील ना करे तब तक we can go for higher high, okay, कौन सा जोन था, हाँ ये जोन, ओके, थोड़ा सा बाकी है लाइक दिस लिक्विडिटी 2650 का, ओके, अराउंड 2650 तक का यू कैन प्लान, अगर इफ यू वांट टू एंटर ओवर हियर, एंटर ओवर हियर 2650 तक का कैन गेट द एनर्जी, बट ये मिड में इट्स, यू कैन गेट स्टॉप लॉस इट एट, कुछ भी हो सकता है, तो प्लान योर ट्रेड वाइसली, ओके।